आई जस्ट फील कि एक नहीं चला तो दूसरा तो चल जाएगा, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि अरे ये नहीं तो कम से कम ये तो ठीक हो जाए, Right. एंड समटाइम्स इट ऑल फॉल्स इनटू प्लेस. बाबा, but this time it's fallen into place. I don't know for how many years. इनके कुछ ऐसे dirty secrets हैं जो हमारी जनता जानना चाहेगी. कुछ आप बता सकती हैं? ये जनता तो जरूर जानना चाहेगी, पर मैं नहीं बताना चाहूंगी. नहीं, but everybody wants to know. Maanvi, right now. That's too bad, guys. Can't tell you. This is a family. You can't break this tripling. देखो नहीं तो फिर सबके सीक्रेट्स है ना फिर. Ah. See, this is a sibling trait. तू मेरा वो सीक्रेट बोलेगी तो मैं तो तेरा मैं भी वो बोलूंगा. वाला सीक्रेट बोलूंगा. I prepped for the character by being very nervous, first of all, especially in the first season, because first time I read it, I didn't understand this guy. You know, it's very difficult to understand this guy, which is the beauty of Chitwan, the character, and what the writers and the creators have come up with. Right. So I used to think of myself as a very serious actor. कि हाँ. मैं notes बनाऊंगा, Are you serious? कैरेक्टर स्केच बनाऊंगा, है ना, कि पहली बार मुझे अच्छा बड़ा रोल मिला है हाँ. एक कहानी में. So when I tried to make a character sketch of this person, it was impossible. Because वो एक सीन में कुछ बोलता है तो आपको लगता है ओह इसको मीठा खाना पसंद है. Oh, then the 2 scenes later वो उसका उल्टा बोल देता है. हाँ. So it's very difficult in my head to understand कि ये कौन है. Right. And that made me very nervous. हाँ. Because I thought ये अगर मुझे समझ में ही नहीं आएगा इंसान तो मैं प्ले कैसे करूँगा. And the learning that I had from this character and from my people that I went to कि भाई अभी मैं क्या करूँ, Right. is that कि हर चीज लाइफ में समझने की जरूरत नहीं होती. Wow. So and you just have to go with the flow, which is what the character is about. Because he doesn't think, he doesn't analyze too much. So you as an actor also learn to not think and calculate and analyze कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा. Just go with the flow. Right. So that was my biggest learning, and I was very very nervous in the first season. पहला सीजन में बहुत नर्वसनेस में खेलता था. सेकंड सीजन तक था कि हाँ अभी बताओ क्या करना है, अभी थर्ड सीजन में तो और अभी धमाका. क्या करना है बताओ. हाँ तो यू गॉटन सो कंफर्टेबल कि अब आप आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार रहे हो. I think what the USP of this show is these people, and each of the characters are real namunas, and they're just quirky and messy, and I love that about this show, that you know there is nothing perfect in the show, and no one is perfect, right? And they really are like. They remind me of my family and the messiness of our relationships. The season also has Charu and Chinmay, that's me and Kumud, going our separate ways. But there is no malice involved. It is done with total love. There's a lot for you to enjoy in the show, and I hope you love it as much as we have enjoyed doing it. I mean, for me, it's a slightly different process for this show because I get unfair advantage that I get to spend more time with the character, with the script, Right. while writing it. Right. For them, it's probably harder because they get it once everything is ready. Right. I mean, the only harder part is to not, what do you say? Not get distracted with everything else that is happening. Right. You know, like to shut the writer in you and just be just purely an actor and do your job and go home. Right. Which is something that I want to learn and do more often. Maanvi, the same question to you. What is your process? How do you get out of the character? She hasn't gotten out of the character. She's in character. So how do you switch? It happens with like certain characters, but Okay. with Chanchal, I feel she's fairly regular, right? She's a regular Right. girl. We've seen her before. Right. वैसा उसमें कुछ बहुत वो नहीं है कि कुछ चल रहा है दिमाग में जो एकदम ही समझ नहीं आ रहा और anything. She's quite normal. Of course, she has जैसा हर character का होता है strengths and weaknesses, but so it's not really very hard to get out of. Okay. Switch on, switch off easily हो जाता है. Thank Plus, you. this set is like that. Like the minute we say cut, हम हंसने खेलने लग जाते हैं. Right. तो, yeah. There is this one scene जिसके लिए which was written in a certain way, but I wanted to shoot it in the rain. Okay. And I thought of it, but we didn't realize that when we were shooting in Panchgani, it's going to be 6 degrees on that particular day. So hats off to the actors. मैंने उनको ठंड में, the peak in the middle of winter, ठंडे पानी में नहलाया in the rain. And when they were saying the lines also, they were shivering. उनके मुंह से वो तो ये natural निकल गया. बहुत ही ज़्यादा natural निकल गया, I think. But hats off to them, they did it really well, I think. See, actually, as Chandan's favorite
is Chitwan, which is why he keeps fighting it. And my personal favorite is Maanvi. Okay, chalo main. Hi, this side Pooja. I want to ask Chitwan, how similar are you to the character in real life? Do you like Chitwan? Yeah, I am very similar to. because I am very similar to Chitwan. Oh. That's why. High five. You all should hang. Definitely. Best moment on the set. Actually, for me, the best moment was the first day of the first season. Because like Arnab mentioned, the itne easily when I narrated the basic idea and he said, bro, we are doing this. So you don't believe it. So I said, yeah, and I went home and I was like, ये बोला है, but थोड़ी मतलब ये सच में करेंगे. Because nobody had done that before. And he actually did it. And actually, even for the third season, this is exactly how he did. कि we should do another season. And then one day I went and I said, कि ये दो idea मेरे को लग रहे हैं. What do you think? We said we do something Pondicherry. in Pondicherry. Let's do something in Pondicherry on these lines. And he said, bro, let's do this. And we actually, और on हो गया. Neeraj will share his best moment from the third season, but for me also, I think it's that moment when we started this, and there is a moment in third season in the last episode between the parents and the sibling, which Yeah. hopefully once you will see, you will realize. So this season also has a lot of parents, because the crisis is about the parents and the tripling. And I think the Neeraj can share what is his favorite bit. I think more than the moment, I think what the story is trying to say in its essence, which is what Arunabh first, when he called me and he discussed the story with me, he said, this is the gist of what I'm trying to say. And that really appealed to me, which is, I don't want to give it away too much, but the fact that our parents are also individuals, you know, they also are just like us. And maybe they might have, while they were bringing us up, sacrificed their dreams and aspirations and desires, but at some point, those desires will come out. Right. So to see the parents as human beings and not just as our parents, Right. you know, and to see them as people with their own desires, own dreams, and they also have as much as a right to fulfill that. I think that really struck a chord. Our parents' generation, if you think about it calmly, is way cooler than us. I agree. Because they've evolved so much. They come from the time of telegrams, they've seen telephone, then they've seen cell phones, WhatsApp and dating apps, and they've seen so much change, and they've made peace with it. Yeah. And we cannot fathom even the smallest thing that makes us uncomfortable. You know, like if our parents say कि आपको इस function में आना है और आपका मन नहीं है तो आपको लगता है अरे क्या हमको bore कर रहे हैं यार. Because we are uncomfortable doing something and we don't want to do it. But come to think of it, they've done so many things which they could be terribly uncomfortable doing, but they've done it for us. So let's have a huge round of applause for all the parents. For all our parents. No, I mean, he's still crazy. There is no denying that. You can't take away the quirk of Chitwan. But that's what appeals to everyone. What appeals in Chitwan to everyone is not that he's doing funny things, but everyone thinks that at the core of it, he's a genuinely nice person who's kind of funny, who's like just following his heart and he's flowing and doing random things. But at the core of it, he's not an asshole. He's a good soul. You know what I'm saying? And those are the kind of people who are most attractive to us. I mean, I get really attracted to such people, you know, who are all over the place, but when you sit with them and when you really think about them, you feel like, no, they are good people, yeah. You know, and that's the core of him. So even in this season, you do see a little bit of a vulnerable side of him, and it's done consciously, as you said, to just underline the fact that, you know, at the core of him, he's a genuine person. I think generally, at least, if there is any argument scene, yeah, it definitely sometimes you remember your own sibling. At least that's what happens with me. So when we started to make the show, the idea was to not make a family or rather a sibling show which is very sanitized. क्योंकि वो वाले तो बहुत सारे हैं जहाँ पे बस में जाके ABCD गाते हैं सब लोग, वो वाले तो हैं अपने पास जहाँ पे पूजा
क्योंकि वो उसके ऑप्शंस आपके पास बहुत है जहाँ पे पूजा में पेड़ा खाते हैं सब लोग। तो ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये लोग चिल भी कर रहे हैं, साथ में शराब भी पी लेते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं, इनके दिल में कोई खोट नहीं है, इनका जीने का तरीका ऐसा है। तो आपको या तो पसंद आता है या नहीं आता है। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बारी मैं किसी होटल में ठहरा था और वहाँ पे ऊपर स्विमिंग पूल था छत पे, तो मैं वहाँ स्विमिंग कर रहा था और मेरे साथ मेरे बहुत सारे को एक्टर्स भी थे, कुछ लड़कियाँ भी थी, हम सब स्विमिंग कर रहे थे। फिर हम बाहर आए, हमने वहाँ खाना खाया, बियर भी पी। फिर एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि यार मैं तो एक फिल्म का विलन लग रहा हूँ, क्योंकि बचपन में जब हम फिल्में देखते थे तो विलन स्विमिंग पूल से निकल के आता था और एक बियर पीता था, पर मैं तो विलन नहीं हूँ, है ना। सो इट्स जस्ट द वे यू परसीव थिंग्स। Hello. Superb. And One I second. just want to add to that, like you had asked, the one word that comes Yeah. to your mind. I mean, the show is lot of things, and also the show is honest. So I think that is just like you say, the show is family. The show is honest, and hence, like there are no, nothing has been done to overtly sanitize or make it look staged. Real है यार, imperfect है. You know, we know that's how it happens, and I think that's really what makes the show beautiful, is that it's honest and it's not trying to preach and be perfect. It was a good question though. हवा करते सब है, बताता कोई नहीं है। ट्रेलर में है सारे हिंट्स। ट्रेलर में एक्चुअली काफ़ी हिंट्स है। इस बार भी ट्रिप है, ट्रैक है इस बार, और इस बार जो शो की गाड़ी है वो मम्मी डैडी चला रहे हैं। हम लोग सिर्फ पीछे बैठे और मम्मी डैडी बहुत रैश चला रहे हैं गाड़ी, तो ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, हम इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला सीजन ऑस्ट्रेलिया में लिखें, ताकि हमको भी जाने को मिल जाए वहाँ पे। हाँ, पता चले कि पापा कहाँ गए, मम्मी कहाँ गए, तो ऑस्ट्रेलिया चले गए। अरे चलो उनको ढूंढो। मतलब लोकेशन को लेके सबके अलग अलग मत हैं। मैं भूटान जाना चाहता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। इनका मैं न्यूजीलैंड जाके एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड बाद में ऐसे एक बोल में डाल के हम लोग एक चिट निकालेंगे और नासिक निकलेगा। एक्चुअली मतलब आपको जो लोकेशन है वो इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, बट एक 10 मिनट के बाद कितनी खूबसूरत लोकेशन है वो भूल जाते हैं लोग। फिर लोग कहानी में, कैरेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तो वो भी एक मसला है। इस शो को तो हमेशा प्यार ही मिला, मैंने देखा है फर्स्ट सीजन से। हम चाहे इतनी एक आँख की फ़ोटो भी डाल देते हैं और बहुत सारे प्यार जाता है। मतलब अभी तक जो कमेंट्स आते थे वो आते थे कि कब आ रहा है सीजन, और थैंकफुली हमने जब से डाला है तो सबको लग रहा है कि अरे वाह, थैंक गॉड आ रहा है। और हम भी मतलब वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी कहानी हो जो मन से हम कहना चाहें तो लाएं, ऐसा ना करें कि सिर्फ पूछा तो हमने बना दिया और फिर लोगों को मज़ा ना आए। वो बड़ी एक जिम्मेवारी का काम होता है। तो कोशिश ये करते हैं कि एक जेन्युइनली दिल को छुए ऐसी कहानी लिखें, वैसी बनाएं तो मज़ा आए। मेरी बहन को तो बहुत पसंद है ये शो। इनफैक्ट वो मुझे ताने मारती रहती है कि आई कांट बिलीव तुमने एक शो किया है अबाउट सिबलिंग्स ट्रैवलिंग टुगेदर, एंड शी एंड मतलब हम दोनों कभी नहीं गए ऐसे, जस्ट द टू ऑफ अस। तो वो मुझे वो और जब हमने प्लान भी किया तो पैंडेमिक हो गया 2 साल, तो अब देखते हैं कब करेंगे, बट या उसको बहुत पसंद है। हाँ, ये ताना तो मुझे भी मारा है मेरी बहन ने भी कि अरे हमने कोई ट्रिप नहीं की साथ में, सेम। तो एक्चुअली अब शो में तो बड़ी बातें कर रहे हो, ये अभी करना पड़ेगा, अचीव करना है हमको। नो, वी प्लान्ड आल्सो दिस टाइम सेम। बिफोर पैंडेमिक वी वर थिंकिंग दैट यू नो वी शुड गो, और फिर फिजल आउट हो गई चीज़। बहुत लोग मिलते हैं जो एक्चुअली में बोलते हैं कि यार मेरी मम्मी का फेवरेट शो है, मेरे पापा का फेवरेट कैरेक्टर है। तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना शो के आने के बाद, जितना पेरेंट्स की जनरेशन ने शो देखा है और लोग आके बताते हैं कि किस तरह से उनके पेरेंट्स का फेवरेट कैरेक्टर है या पेरेंट्स का फेवरेट शो है। मेरे लिए सरप्राइज था, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, अभी तक मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, यंग लोग जो आके बोलते हैं कि यार माई पेरेंट्स लव दिस शो। ऑल्सो इफ़ यू नोटिस, शो में जब भी हम में से कोई भी गाली दे के बात करता है या कुछ भी, तो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं चितवन लैंग्वेज, चंचल लैंग्वेज, चंदन लैंग्वेज। तो और वही होता है ना रियल लाइफ में भी। हम लाइक आई रिमेंबर इतनी बार गलती से यू से द एफ वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड देन यू लाइक अच्छा ठीक है, यू नो, देन यू लाइक ओ शिट व्हाट डू वी डू।
Fudge. Fudge. Fruits. Oh, fudge. Oh, fish.